Okay. Okay, you can see the presentation slides. Yes, sir. Everyone can see the presentation slides. Yes, sir. My voice is loud and clear properly. Yes, yes, sir. It's clear. Girls, good morning, girls. Girls, बस गुड शनिवार मॉर्निंग का सर। व्रत है। हाँ वही बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, तो सोचा कोई है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलो विल स्टार्ट। ओके, so we have reached to our third unit as a trade union and collective bargaining. Okay, now when you talk about a trade union, okay, trade union, the most importantly, trade union is meant to safeguard the interest of the worker in an organization. ओके कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेड यूनियन अगर फॉर्म्स होते हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. ओके, अगर एम्प्लॉयज interest would be wages, salaries, bonuses, incentives, working conditions, employments, job security, social security, providing facilities in an organization, medical facilities, provident fund facilities, gratuities. Okay, pension plans are there, life insurance, medical insurance should be given to the employees. Proper wages should be given to the employees on time. Overtime facilities, whenever the employees do the overtime in an organization, so whatever wages will be earned should be get in time to the employees. So all these things are there in trade union, and trade union has the responsibility to make sure that they fulfill the requirement of an employee. Whenever there's a large number of employees working in an organization, there will be certain representatives of the entire union. Okay, they are said to be the trade union. Minimum seven members are required to form a trade union, and these seven members will represent, or seven or more members will represent the entire employees of an organization. So basic purpose किसी भी organization का होता है to represent the employees and to safeguard the interest of an employees. Second, you have a collective bargaining. Collective bargaining is something like the negotiation part in an organization. Whenever there's a negotiation happens between the employer and the employee, okay, the organization has to make sure that the smooth working between the employee and the employer. And this collective bargaining concept, okay, the collective bargaining concept कब आता है, जब कुछ सारे डिमांड्स एम्प्लॉयज़ के होते हैं, कुछ सारे डिमांड्स एम्प्लॉयर्स के होते हैं. They both needs to go hand in hand, and without any fight, without any problem, they can sit together, they can discuss on the various issues, and they can come to an amicable solutions, and both the employer and the employee should have a win-win situation. That is said to be the collective bargaining. uh, Trade union, the meaning of a trade union, the industrial worker comes together for their protection and also for their mutual benefits. They form their voluntary association called trade union. It's a voluntary association. Trade unions are association of workers and are formed with an intention of protection the workers against exploitations of an employer and also to improve the workers condition. So most importantly, the trade union is formed to safeguard the interest of the employees and to safeguard the employees from the exploitation. Then you have the union negotiate the contract and conditions with employer, keeping the employee satisfaction high and protecting workers from the unsafe or the unfair working conditions. The most importantly, they need to protect the workers from unsafe or the unfair working conditions. Dell Order has given a definition. A union is a continuing long-term association of employees formed and maintained for a specific purpose for advancing and protecting the interest of members in their working relationship. Then there are features of trade union. First of all, you have a collective action. The collective action
is most importantly, it is not a work of a single part. Okay, it is not a work of a single person. It is a collectively or a united work. So whenever a trade union comes into the picture, the trade union do something for their employees. It is a collective action taken by all the employees. So it is not something like it is an individual person having any grievance. Okay, or the individual person has to go and fight in front of the employer. Despite an individual person has the issue, he can go and take the problems to the trade union, and trade union can collectively take the entire issue into in front of management. Secondary, you have a voluntary association. It is a voluntary association. Okay, it is not something like you need to be compulsory. Okay, it's an independent workers body. जैसे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन होता है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन होता है, then you have a general labor union, friendly societies, unions of intellectual labors, all India trade union congress. So it is a voluntary association. Third, you have association of employees. Again, it is also an association of employees. जैसे employers का association होता है, वैसे ही employees का भी association होता है. Then it would be a professional, trade, industry. Okay, it would be teacher, doctor. There would be auto rickshaw driver, Ola cab, Uber. Then whenever you talk about any of the employees working in company, so it is an association of an employer. So trade union can you can find everywhere. ओके, आप रिक्शा वालों में देखोगे तो वहाँ पे यूनियन है, ट्रेन में रहेगा तो मोटरमैन वालों का यूनियन होता है, क्या डॉक्टर्स यूनियन है, टीचर्स यूनियन है, एडवोकेट्स यूनियन है. ओके, देयर आर एवरीवेयर, यू कैन सी इन एवरी इंडस्ट्री. Okay, you can also you can see the association of employees. Then it is a permanent body. ऐसा नहीं है कि it is a temporary body, it is a permanent body. And once it is formed legally, okay, it is registered into the with the government under the trade union act, तो it is a permanent body. इसको कैसा ऐसा अपने मन के हिसाब से टेम्पररी वगैरह इसको नहीं अनाउंस कर सकते. इट इज वन ऑफ द परमानेंट बॉडीज. इसके मेंबर्स ऐड एंड लेस हो सकते हैं फॉर्म होने के बाद भी, बट इसका ये मतलब नहीं कि कम रहेंगे तो भी निकल जाएंगे. तो इट इज समथिंग लाइक इट इज अ परमानेंट बॉडी. वंस इट इज रजिस्टर्ड, it is one of the permanent body. Operates in a democratic principle. So most importantly, it operates in a very democratic situation. All the decisions and votings are taken with all due discussion with all the employees. All the employees of a trade union will sit together whenever there is issues in an organization. They will sit together, they will discuss the issues with each other, and they will vote. Okay, and whatever positive outcome will come, they'll take that decision. So it operates in a democratic principle. Then you have a continuity in operation. So it is not like it is just once you have utilized the benefit of a trade union and then you cannot utilize it. It is on a continuity basis. You can use on a regular basis whenever you have a grievance in an organization. On a regular basis, trade union will always help the employees to find out the solutions and find out the ways in which the employees can get safeguarded. Then it has a wide coverage. It really has a wide coverage. Okay, then the trade union are concerned with economic, culture, social life of a member. Okay, they it act as a defense for protecting the rights of the worker, voice of the worker, then decision affecting them directly. Then again, it has a wide coverage for the higher wages and the welfare facilities of the employees. Then it is act as a collective bargaining agent. Yes, it is collective bargaining itself is a negotiation part. It's a negotiation in an organization. So collective bargaining is one of the most important concept. So अगर हम लोग ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन कैन बी सेड एज एन एजेंट who do good amount of collective bargaining in companies. Okay, in an organization. तो वो जो भी उनके issues रहेंगे, problems होंगे, they will directly go and they will directly talk to the management and they'll try to fulfill their demands. So it act as a collective bargaining agent. Then it has a legal status. As I said, it is a permanent body. So permanent body कब होती है? When it is getting registered under Trade Union Act 1926.
1926 के एक्ट के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, जब भी ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो इट गेट्स द लीगल स्टेटस. Concern for workers and their demands. So trade unions are always more have their concern on their workers and their demands, whatever demands would be there. For example, uh, the location of the organization is too far from railway stations, so the auto rickshaw or the taxi driver might be charged a heavy or hefty amount to the employees, so they can request the organizations to give the bus facilities from stations to organization and from organizations to station. Again, if the wages are not getting paid on a regular basis, on timely basis on everyone, so they can go and talk to the people. If overtime is not paid to the employees on regular basis, so they can ask the management to give good amount of overtime on a regular basis. If the medical insurance, if it is a manufacturing company and there's no proper medical insurance is taken out for the employees, so you can request the employees to take out the medical insurance. So they always a concern for their demands. Then it has a common interest. So when you talk about a trade union will not have the purpose to fulfill their own demands. ट्रेड यूनियन का खुद का डिमांड फुलफिल करने के लिए उनका पर्पस नहीं होता है. They always has a common purpose to fulfill the demands of the employees, okay, in the company. Whatever demands are be there, okay, the employees would be facing, that demand needs to be fulfilled. So it really has a common purpose or a common interest. Then it is universal concept. See, trade union is not something like it is just present in India. Okay, trade union you can see everywhere. Okay, it is already there in many countries. You can talk about India, you can talk about Germany, Russia, okay, Italy, Europe. Wherever you talk about, in every country you can see the trade union concept. So it is not something like it is just you can see the trade union problems or trade union who are representing employees in India. So it is a universal concept. Then there are objectives of trade union. First of all, wages and salaries. See, whenever the organizations does not provide a proper wages and salaries to the employees, the most important part of every employee in company is the money. हर एक बंदा कंपनीज में काम करता है, वो किस लिए काम करता है? पैसे के लिए काम करता है. सो अगर पैसा है उसको टाइम पे नहीं मिलेगा, तो वाई शुड द पर्सन शुड वर्क इन अ कंपनी फॉर 8 to 10 hours? So trade union will really has the most important priority problem, a priority concept, a priority thing on their mind, on their list, on their agenda, is that the wages and the salary. The employees, all the employees, that would be from peon to the middle level managers or whichever designation the person is working in companies, each and every employee in an organization should get the proper wages and salaries. Then working conditions. Working conditions का मतलब होता है proper ventilation, sitting arrangement, computer, lighting facilities, fan, table, chair, okay, canteen facilities. So they should always get proper air safety equipment, sanitization, restrooms, okay, discharge room, hazardous duties, drinking facilities, refreshments, then minimum working hours, leave and rest, holidays, pay holidays with pay, and most importantly job satisfaction, job security. These all will things will come under the वर्किंग कंडीशन. सो अगर इसमें से कुछ चीज लोगों को नहीं मिल रही है, तो इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेड यूनियन टू मेक श्योर दैट दे शुड गेट द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. सो अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होगा तो किसी के हेल्थ को लेके इश्यूज नहीं होगा, प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहेंगे, सेफ्टी रहेगी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो किसी की जान पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो दे शुड बी ऑलवेज यू कैन सी uh, proper working facilities should be provided to the employees. Then you have discipline. Yes, discipline needs to be conduct. Trade union not only conduct negotiations with respect to that items, okay, with respect to the working condition, but we improve to protect the workers from the clutches of management. Okay,
For example, management just cannot find a random person in company and they can victimize that person and always try to torture that person for whatever, for various reasons. Okay, there'll be physical torture, mental torture. They might demote the person, they might transfer the person. Okay, they might transfer the person to an isolated place, so they cannot just victimize that things. So this uh, trade union concept brings good amount of discipline in organization. Okay, तो वो किसी भी तरह का गलत व्यवहार किसी भी एम्प्लॉयज के साथ में नहीं कर सकते. तो दे इफ दे रियली want to make and fair and equal things to the employees, so trade union will be there to maintain a proper disciplines. Then personal policies are also there. Whenever you talk about a personal policies with respect to recruitment, selection, promotion, transfer and training, so policies are made, okay, to make sure that ki a fair recruitment and selection process are there, fair promotion process are also maintained there. कोई भी unfair things, unfair practices is not happening in organization. So personal policies का मतलब होता है the rules and regulations formed in an organization. The various rules and regulations are there that needs to be followed by each and every employee of an organization. Then you have welfare facilities. As I said earlier, then you need to have proper canteen facilities, provident fund facilities, gratuity, pension plans should be there. Then you should have a good amount of schools, colleges for their children, for the employees who are working in an organization. जो employees आपकी company में काम करते तो वहाँ पे उनके लिए schools होने चाहिए. Okay, whatever social problems are faced by the employee that needs to be resolved, the proper sanitation facility, hospital facility needs to be given to the employees in an organization. So welfare facilities plays a very crucial role. इंडस्ट्रियल रिलेशंस सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेलफेयर फैसिलिटीज. वेलफेयर फैसिलिटीज में यही सारे चीज आपको आते हैं. प्रोविडेंट फंड्स आता है, ग्रेजुटी आती है, पेंशन प्लान्स आते हैं, schools and colleges, sanitization, restroom. Then you should get proper holidays, you should get proper pay packages if you're entitled for incentives and bonuses. So you should get that all stuffs in a proper way. तो अगर इसमें सब कोई भी चीज कंपनी बोलती है कि हम देते हैं और आपको वो नहीं मिलती है, so trade union will bring this matter in front of the management and try to get that rights to the employees. Then it is an employer employee relations. Yes, the trade union really makes sure that it has a proper trade, what you say, a proper harmonious relationship between the employer and the employee. Trade union really has an objective to make sure that the proper workers and management relationship should be there. This trade union will always help to do a proper and cordial negotiation activity in an organization. So it always try to make a proper employer and employee negotiation in an organization. So they try to make sure that the proper negotiation should be there in the employer and the employee. Then it is a negotiating machinery. Yes, trade union is a negotiating machinery. Whenever the organization or the employees of an organization needs to bring something in front of the management, they need to talk to trade union. They need to talk about that whatever things are required by the employees. ओके, जैसे सेफ गार्ड्स नहीं है या इक्विपमेंट्स बरोबरली हैंडल नहीं हो रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, या सुपरवाइजर्स या सुपीरियर उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छा नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं है, सफोकेटिंग होता है, या लाइटनिंग फैसिलिटीज नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है. So trade union can go and talk to the management that sir, this is the issues the really employees are really facing, and if you really want a good amount of productivity production in companies, so fulfill such kind of demand. So this can help the employees
to make them comfortable in a company, and they can do good amount of production. So it is one of the negotiating machines. Trade union is a negotiating machinery. Then safeguarding the organization health and the interest of the industry. Yes, it whatever what you say, the grievances are there, okay, whatever problems are there in an organization, they try to make sure that the health of the company can be safeguarded easily. Okay, they try to make whatever working facilities are there that needs that can be easily, they can easily try to satisfy the employees in the company. This say when you talk about a trade union, it try to reduce the absenteeism, labor turnover. Then there's a proper systematic grievance settlement procedures can be easily formed. Okay, a proper harmonious industrial relations can be formed between the employer and the employee. So this is how the it can safeguard the uh, interest of employer and the employee. Then there are various roles of a trade union. The role of trade union, the role toward the trade union members. So trade union have certain roles towards the trade union members. First of all, to safeguard the workers against all sorts of exploitation by the employer, by the union, and the political parties. To protect workers from the unfair labor practices of the management, to ensure health, safe, and conducive work conditions, to exert pressures for the enhancement of reward associated with the work only after making a realistic assessment of its practical implication, to ensure a desirable standard of living by providing the various types of health services such as health, housing, education, recreational, cooperative, etc., to guarantee a fair deal and social justice to workers, to remove the dissatisfactions and the redress the day-to-day grievances and complaints of workers, to encourage the workers' participations in the management of an organization, then to make the workers aware about their rights and duties, to settle the dispute through negotiation, joint consultation, and voluntary arbitrations, and through adjudications. So this is what is the role of a trade union towards a trade union member. Then there are the certain roles towards the industrial organizations are also there, to highlight the organization as a joint enterprise between workers and management, and to promote identity of interest, to increase production quantitatively as well as qualitatively by laying down the norms of production and ensuring the adequate observations, to help in maintenance of discipline, to help in removal of dissatisfactions and redressals day-to-day complaints and grievances, and ensures workers loyalty, to create opportunity for workers participation in management and strengthen the cooperation, to promote harmonic relationship between workers and management by settling dispute through negotiation, joint consultation, and avoid litigation, to create a favorable opinion of a management towards a trade union and improve their status in the industrial organization. Then there are also the role towards the trade union organizations to improve the financial position of the concern by fixing the higher subscription. Higher subscription का मतलब होता है to take the regular trade union fees. Okay, that would be 100 rupees, sometimes 150 rupees, 200 rupees for the entire year. So it is good that you pay 200 rupees and you become a member. Then to preserve and strengthen the trade union democracy, to train members to assume leadership positions, to improve workers' network of communications between union and its member, to promote harmonic relationship between different union, to create an unified trade union movement, to resolve the problem of factionalisms and to promote unity with the union, to prepare and maintain the necessary records, to maintain the trade union organization on scientific lines. These are the things you can see on a trade union organization. Then there are certain role of a trade unions toward the society as well, to render all sorts of constructive cooperations in the formulation and implementation of plans and policies relating to the national development, to actively participate in the development of programs of national development such as family planning, facilitation, national integration.
Then you have to launch a special campaign against the social evil of corruption, casteism, then to enable unorganized sector to organize itself, to create the public opinion favorable to government's policies and plans and mobilize people's participation, to create a public opinion favorable to the trade union and thereby raising the social and public image. So these are the different kinds of roles the trade union needs to be follow or they needs to do towards the trade union members, industrial organizations, trade union organizations, and towards the society. Then there are functions like activities of a trade union. First of all, protection. So the most important part of trade union is that they need to protect the employees from getting exploitation from the employer. सबसे important काम होता है ट्रेड यूनियन का कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वर्कर किसी भी मैनेजमेंट के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए या they should not take the undue advantage of the worker. So they need to protect the employee, they need to protect the worker, okay, from getting exploitation. अगर कुछ गलत कर रही है मैनेजमेंट तो वो गलत से उसको बचाने की कोशिश में ही कोशिश उसको करना चाहिए. Then proper standard of living, they need to give proper standard of living, fair wages, proper working conditions, welfare facilities like health, housing, recreation और social securities, ये सारा चीज देना ही उनका काम होता है. तो अगर कोई भी एम्प्लॉयज को प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रहा है तो it is a responsibility of a trade union that they should give the entire they should give they should make sure that the employee should get proper standard of living. Again, it is a collective bargaining agent, so it is a negotiating agent, a connecting link as it is a employer and the employee connecting link. Okay, increase cooperation and well-being amongst the worker. It makes sure that whatever complexities demands are there, okay, if there's a most what you say there's a most problems can be faced in the between the workers, that also needs to be resolved. अगर किसी भी workers में या किसी भी division में भी problem होता है between workers as well, so that needs to be resolved in a proper way. Then securing the facility for workers, securing a proper facilities should be given to the worker. The most important thing is that they need to get to make sure that whatever working for conditions are there, the proper working conditions should be given to the employees. So trade union needs to fight. The trade union makes sure that they always fight against the management, against the organization, if the employees are really struggling to get good working conditions. So they need to safeguard the interest of worker. Protest and strikes whenever it is necessary. They need to make sure that they do good amount of protest and strikes and try to get the demands fulfilled. Okay, so for example financial issues है या whatever non financial issues रहेगा, so they the most importantly the organizations need to understand the level of strike, the level of protest they are doing, and they need to take into the considerations and try to resolve the problems. उसके बाद you have legislation. Legislation is most importantly all the trade union has some or the other kind of political background. The political party do good amount of backing, they have good amount of support from the political party, and they try to safeguard the or try to get good amount of support from government as well. So हर एक ट्रेड यूनियन जिसका अच्छा खासा ट्रेड यूनियन का रैपो होता है तो वो रैपो या जिनका अच्छा खासा ट्रेड यूनियन है मार्केट में, so they get good amount of response from good amount of political party as well, and the political party try to give and try to fulfill the demands of the employees. Representation, trade union represent the working class in various national and international forums. Okay, ट्रेड यूनियन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है और करता भी है. फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, दिस आर द वन ऑफ द national and international level on which the trade union are getting
represented. Then there's a type of trade unions can also be seen. Okay, first you have reformist. Reformist are those trade unions who don't believe in destroying the economic of an organization. ये ऐसा यूनियन है जो किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय में कुछ यकीन नहीं करती. दे डू गुड अमाउंट ऑफ नेगोशिएशन in a very peaceful manner. They try to modify things, they try to modify and do unfavorable things in their with their members of an organizations. So reformist जो union होती है वो this kind of unions do not believe in destroying the economic of a organizations or economic of a country. They believe in resolving issues very peacefully. Okay, so this is why the reformist union is very much famous. Even today it is much more famous. Okay, it has two types, that is a business unionisms and friendly or upliftment unionisms. Then you have a revolutionary union. Revolutionary union ये ऐसा union है जो destroying the present scenario and replacing it with the new or different institutions according to the ideal. Okay, ideas, thinkings, morals, beliefs के values पे उसको change करना, वो ऐसे सोच में, ऐसे सोच वाले unions you can see. So such kind of structures cannot be seen nowadays because the peoples are really aware about many things, the rules, regulations, policies के बारे में बहुत सारे employees को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है. तो they do not follow the revolutionary union because it destroy the economic thing of organization, the economic of an organization. So you cannot afford an organization, अगर किसी भी country का या किसी भी company का economic factor destroy होता है तो it will really take good amount of time to stand by again. They need some time to come on their proper way. जैसे अभी हम लोग का हालत हो गया, जैसे रियली इंडिया इज स्ट्रगलिंग नाउ डेज. ओके, हमारा जीडीपी बहुत डाउन हो चुका है एंड वी आर द मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू दिस पैंडेमिक. In such kinds the revolutionary union will really not help out. So we really want reformist union जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि बाबा हाँ we need to make some minor modifications and we need to make sure that कि trade union अच्छे से काम करे और लोगों के भले के लिए काम करे. So these are the two types of trade union you can always see. Then again, there is a union classification on the on the basis of the membership structure. First, you have a craft union. Craft union is something like they are into a very specialized business. Okay, ये ऐसे लोग हैं जो what you say, they have their different skill, a very different skill. For example, electrician, plumber, drivers. Okay, and these are the people will come under a craft union because they have a unique skill and they are working in a unique profession. So अगर मैं ओला उबर की बात करूँ so they will come under the craft union. अगर ऑटो रिक्शा वालों की बात करूँ they will come under craft union. So these people have the special skill because they are working on a special profession. So even they have the गोल्ड स्मिथ वाले हो गए, ज्वेलर वाले हो गए. तो ये सारे को हम लोग क्राफ्ट यूनियन बात करेंगे. तो अगर गवर्नमेंट मेक सम पॉलिसीज विच कैन hamper or which will not give good amount of business to the craft union, so they can go for a strike. Then you have a general union. General union is the union for all the workers, for skilled or semi-skilled or the unskilled workers of all the industries. सारे industries, it is a general unit, will be representing all the industries. जैसे कोई specific industry को represent वाला नहीं करते. For example, manufacturing, IT, FMCG. Okay, ऐसा कोई specific union की बात नहीं कर रहे हम लोग. Whenever you talk about the union will be always have a general concepts. So this general union will be have the union which will be representing all the industries.
देन यू हैव इंडस्ट्रियल यूनियन. दिस इंडस्ट्रियल यूनियन का मतलब है कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें. फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉब्लम कैन बी सीन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, so the union will come to strike, they'll start protesting. Okay, that one automobile industry giving all the facilities to their employees, why you are not giving facility to us? For example, Toyota is giving all the benefit to their employees, so the employees of a Maruti might go and do strike. That in other organizations the companies are giving all the benefits to their employees, why you are not giving good amount of benefits and facilities to their employees? So one industry problems can be created. So automobile industry is one of the example you can get. Or for example, the problem can be seen in a manufacturing industry. The problem can be seen with respect to employees and organization with respect to IT industry or telecom industry or FMCG industry. So it is focus on a single industry. It is not something like कि overall सारे companies से सारे industries को हम लोग ले रहे हैं. It will be just focus on single industry. Then you have white collar industry. White collar industry का मतलब होता है the class one people, the bigger peoples, advocate, doctor, lawyer, ओके, जो पायलट्स, टीचर्स, ये सारे जो लोग होते हैं वो सारे लोग वाइट कॉलर्स में आते हैं. पायलट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स. ओके, दिस ऑल पीपल कम अंडर द वाइट कॉलर एम्प्लॉयज. सो इवन दिस ऑल पीपल हैव यूनियन. कल अगर आपने टीवी पे देखा होगा तो कुछ 47,000 डॉक्टर्स वेंट ऑन स्ट्राइक because they have some issues, they have some problems, so all the doctors went on strike. So अगर already इतना huge pandemic चल रहा है बाहर, और pandemic के बावजूद अगर आप वहाँ पे strike करोगे तो कितना नुकसान होगा. So white collar workers are said to be the people who really working on a different profession. These are the four union you can see: craft union, general union, industrial union, white collar union. Then this is the historic evolution of a trade union. आप इसको go through कर सकते हो, जस्ट एक बार glance कर सकते हो इसको. इस पे कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट बस आपके बुक में लिखा है तो आई थॉट आई विल पुट. यू कैन डू अ ग्लांस. आई पर्पसली रोट ऑल दिस स्टफ इन पीपीटी, तो जैसे ही आप लोग पढ़ोगे तो आपको वो आना चाहिए. देख के आप देख के इसको पढ़ सकेंगे. पढ़ा? Everyone has done. Done, sir. This is the second phase, which falls between 1900 to 1947.
Done. Okay, so this was the historic evolution of trade union 1850 से लेके 1870 तक था. ओके 1908 में रॉयल कमीशन आया, 1931 में सब आया. तो this just they have given the overall view how the trade union has formed. Oh, sorry. Then recognition. Now recognition of a trade union is also important. Okay, whenever you talk about things, the employees also should also get recognized. ऐसा नहीं कि ट्रेड यूनियन फॉर्म किया और उसमें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पीपल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्सेप्ट यू कि हाँ यस यू आर अ ट्रेड यूनियन. The most importantly, whenever the companies are there, the companies needs to accept the trade union. Okay, so types of recognitions you can see, uh, voluntary recognitions and you have a statutory recognitions. When you talk about a voluntary recognition मतलब employer ने खुद से ही employee ट्रेड यूनियन को एक्सेप्ट किया है. That's said to be the trade union. Sorry. So it is a voluntary recognition when the employees are when the organizations voluntarily accept the recognition of employee. Okay, उसको हम लोग बोलेंगे voluntary recognition. अगर employer मना करता है कि हम आपको recognize नहीं करेंगे, तो लीगल मेथड से जो रिकग्निशन होता है गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के नॉर्म से या प्रोसीजर से जो रिकग्निशन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैट्यूटरी रिकग्निशन. अगर आप हमको नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम लोग लीगल मेथड से जाएंगे और लीगल मेथड से आपको ओके या आपके एसोसिएशन को या एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन को हम हमारा रिकग्निशन मानना ही पड़ेगा. So if the employer trade union, the employees trade union follow all the basic norms, so the employer need to recognize, it is mandatory to recognize them. The most importantly इनको वो recognize करना ही जरूरी होता है. Then there is a condition for recognition. Trade Union Amendment Act 1947 Section 25D provides that a trade union will not be entitled for recognition by order of labor code under Section 25E unless it fulfills the following conditions. See, जब भी आप एग्जाम्स में जाओगे तो ट्रेड यूनियन के एक्ट रहेंगे या अमेंडमेंट एक्ट रहेंगे, उनके ईयर्स आपको अच्छे से आने चाहिए. ओके, माइट बी एमसीक्यूज में आपको ट्रेड यूनियन एक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा या उनके ईयर के बारे में पूछा जाएगा, तो यू शुड विल बी वेल वर्स अबाउट द ईयर्स. सो ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 1947 section 25D provides that a trade union will not be entitled for recognition by order of labor court under section 25E. So that's its ordinary members are workmen employed in same industry or in industries closely allied to or connected with other. It needs to represent of all the workmen employed by the employer in that industry or those industry. Rules do not provide for exclusion for membership of any class of workmen. So you cannot take the free advantage of a trade union. You need to pay the membership subscription fees. Rules do not provide for the procedures for declaring a strikes. A rule provide that a meeting of its executive will be held at least once in 6 months. अगर आपको स्ट्राइक्स वगैरह करना है तो आपको पहले से इंटीमेट करना होगा. ऐसा नहीं कि आप उठ के कभी भी स्ट्राइक करोगे. इट इज नॉट राइट. Okay, it is not the procedure. Whenever you want to do a sit down strike, whatever kind of strikes you need to do in companies, so most importantly you need to inform the organizations. Then you need at least you need to keep the meeting of all the executives at least once in a 6 months.
Then a registered trade union, and that is compiled all the provision of the act, whatever acts are there that needs to be followed by the trade union organizations. Then this is the rights of a recognized trade union to negotiate with employer in respect of matter connected with the employment conditions, to collect membership fees from the members on the premises of the industry, to nominate its members representative on the grievance committee constitute in an establishment, to nominate its representative on the joint management councils, to receive replies from the employer in response to their letters, to conduct interview of employer. So this is the rights of the trade union. Then there are four types of recognition you can see. First of all, you have a membership verification, checks off, secret ballot, and code of discipline. First of all, you can see the membership verification. You just need to pay the membership fees, and the organization can go and check the receipt of the trade union, कि which trade union have how many employees. उसको वो काउंटर चेक करेंगे, या एक मेंबर अपॉइंट होता है फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक ऑफिशियल अपॉइंट होगा फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट. ओके, that would be from a state or a central government, and the person will go and check the membership subscription receipts, and he'll check the list of the employees name who are already working in organizations, and जो जिसके ट्रेड यूनियन का ज़्यादा मेंबरशिप फीस होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. So the most important work is that they need to collect the membership subscription fees from all the employees of Indian organizations to get recognized. Then check off का मतलब होता है the employee needs to give in writing that the person belongs to so and so trade union. So it is most importantly for the employer also that कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से ट्रेड यूनियन के अंडर जाता है. तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन के बंदों को या जो भी एम्प्लॉयज होगा ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको कंपल्सरीली राइटिंग मोड में देना होगा कि आप कौन से ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हो. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाट यू से दी employer can force, the employer can put pressurize on the employees कि आप ये वाला यूनियन ज्वाइन करो, आप वो वाला यूनियन ज्वाइन करो. सो यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेटिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई दी व्हाट यू से when you talk about a checks off मतलब यही होता है कि you the employer can go and check which employees having which employees have joined which trade union. Then you have secret ballot. Secret ballot is none other than the secret box. You do the voting कि in which trade union you like to be work. आपको कौन से यूनियन में काम करने की इच्छा है, आपको कौन सा यूनियन ज्वाइन करना है, यू नीड टू डू द वोटिंग. ये बहुत जुना कॉन्सेप्ट है. दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. जब भी किसी भी तरह का वोटिंग्स होता है तो वोटिंग्स सीक्रेट बैलेट में किया जाएगा. यू कैन हियर मी प्रॉपरली? कुछ ये हुआ? No, sir. No, sir. It's okay. वन सेकंड. Something have a problem with the mic. Now you can hear me? Yes, sir. Hear you. Okay, cool. Still not clear? It is clear. It is clear, na? Cool. Yeah. Okay. So secret ballot is also there. Secret ballots are the voting thing. The vote, you can put the vote. You can give the vote to the employees, to the trade union, and you can say that I am belong to so and so trade union. Then you have code of discipline.
code of discipline is the agreement between the employer and the employee. The trade union needs to follow all the rules and regulations and policies. They need to sign an agreement between the employer and the employer that we will follow all the rules and regulation. Then only we will recognize you. So it is the thing that the employer put some pressurization on trade union that you need to follow the various guidelines. On the basis of guidelines, you need to make sure that you have good amount of trade union. जैसे आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, 15% of the employees should represent the industry, 25% of the employees should represent the organization. तो ऐसे छोटे मोटे जो भी नाम नॉर्म्स रहेंगे वो नॉर्म्स उनको फॉलो करना है. Then there's always also the rights and privileges of a registered trade union. The registered trade union के भी कुछ rights वगैरह होते हैं. So first right is that object on which general funds may be spent. See, whenever the money, okay, whatever money is being collected from the employees on the name of a subscription, on the name of a trade union fees, that money also can be utilized for different purpose. Okay, first you have a, for example अगर ट्रेड यूनियन फॉर्म होता है तो यू नीड एन ऑफिस. सो ऑफिस आया तो उसका रेंट आपको भरना पड़ता है. देन लाइट बिल, ऑफिस बेरर्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा 2 लोगों को, तो वो 2 लोगों के अपॉइंट के लिए आपको उनको सैलरी देना पड़ेगा. वॉट एवर सैलरी यू डिसाइड, या जो भी ट्रेड यूनियन डिसाइड करेगी तो वो सैलरी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा. स्टेशनरीज का खर्चा होता है तो वो सारा चीज़ आप वहाँ पे दे सकते हो. तो ये सारा जो एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस कैन बी incurred with the help of a general fund. So whatever general funds are there, general funds can be easily utilized for such kind of expenditures. Then second, you have a constitute of a separate fund for a political purpose. See, whenever you talk about a political purpose is something like is when there is an election या किसी भी तरह का कैनवासिंग करना है या किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको देना है या किसी का तरह का प्रिंट आउट निकालना है या कोई कैंडिडेट के बारे में आपको लिटरेचर या डॉक्यूमेंट प्रॉपरली देना है. So you can utilize that money for the political purpose. You want to do good amount of advertisement of that candidate. ये सारा चीज के लिए, ये political purpose के लिए आप उसका utilization कर सकते हो. Then criminal conspiracy in trade union. So trade union has a right and privilege that if any member of an organizations do any offense, okay, या कोई भी तरह का ऑफेंस वो ना चाहते, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन अगर वो करता है तो आप उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते. ओके, ही हैज नॉट डन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, ओके, विदाउट एनी प्रॉपर इंटेंशन. कोई भी इंटेंशन से लेके वो कोई भी तरह का ऑफेंस उसने नहीं किया है. सो ही इज नॉट कंडक्टेड और एग्रीमेंट ऑफ एन ऑफेंस, तो आप किसी भी तरह का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यहाँ पे नहीं कर सकते. ओके, तो यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट. ओके, you are not liable for punishment under subsection 2 section 120b Indian Penal Code 1860. ओके, 1860 के इंडियन पेनल कोड के हिसाब से 120 सबसेक्शन बी के हिसाब से अगर कोई भी बंदा किसी भी तरह का आप पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता तो आप उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे डिस्प्यूट पे नहीं कर सकते. अगेन, immunity from a civil suit in certain cases. Here also it has a same kind of stuff. You will get the immunity from civil suit. Civil suit से आपको immunity मिलेगा in certain cases. Certain cases का मतलब क्या है कि किसी तरह का बाहर गलत काम हुआ है, ओके, एंड वो गलत काम आपके ट्रेड यूनियन से हुआ है, बट द पर्सन इज अनअवेयर, द पर्सन डज नॉट हैव एनी नॉलेज कि ऐसा कुछ मेरे नज़र में या मेरे ध्यान में नहीं था
और मेरे ध्यान से मुझे पता नहीं और ये सारा चीज हो चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको इम्यूनिटी मिलता है, आप पे या आपके ट्रेड यूनियन पे किसी भी तरह का सिविल सूट्स फाइल नहीं होते। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पीठ पीछे अगर किसी और लोगों ने आपके ट्रेड यूनियन के नाम पे ऐसा कुछ गलत काम किया है और वो आपको पता नहीं है, तो ऐसे सारे चीजों में आपको इम्यूनिटी मिलता है टू गेटिंग सूट और सिविल सूट इन अ कोर्ट। तो ये आप यहाँ से आप बच सकते हो। Then enforceability of an agreement. Okay, no one can put any kinds of enforceability. No one can force you for any kind of agreement. Okay, आप पे कोई भी और किसी भी तरह का फोर्स, कोई भी आप पे फोर्स नहीं कर सकता कि यू गेट इनटू एग्रीमेंट, ओके, बिटवीन अ मेंबर एंड अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ऐसा कोई अगर आपको फोर्स करेगा तो वो एग्रीमेंट void हो जाता है, it is not valid. So you cannot force any members of a trade union या member और trade union के बीच में किसी भी तरह का forcefully agreement आप नहीं कर सकते। Then right to inspect books of trade accounts. Yes, the trade accounts के members को सारा हक बनता है या rights बनता है कि जितने भी उनके books of accounts है उनको आप चेक करो। सी ट्रेड यूनियन के मेंबर में 1000 2000 पीपल्स रहेंगे, तो हर एक बंदा एक दूसरे को जाने ये जरूरी नहीं है। सो अगर किसी एक ग्रुप को लग रहा है कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, तो वो बुक्स एंड अकाउंट्स आप चेक कर सकते हो। द एंटायर मेंबर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज अ राइट्स टू चेक, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या जो जो खर्चा जहाँ जहाँ पे हुआ है वो सारा चीज चेक करने का पूरा अधिकार एक ट्रेड यूनियन मेंबर्स को होता है। Then right of minor to membership of a trade union. See, if a person fulfills the basic eligibility norms, 18 साल के ऊपर अगर बच्चा होगा तो he is eligible to become a trade union member. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर एक बच्चा मिनिमम 18 ईयर्स को फुलफिल करता है या 18 ईयर्स कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो एक ट्रेड यूनियन ज्वाइन करें, so he can join the trade union. Then effect of change of name of amalgamation. If there's an amalgamation, मतलब two or more registered trade union will come together, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमलगमेशन का मतलब होता है कमिंग टुगेदर या ज्वाइनिंग टुगेदर और वर्किंग टुगेदर, उसको हम लोग बोलेंगे अमलगमेशन। सो अगर दो लोगों ने मिलके कुछ ज्वाइन करके भी रजिस्टर्ड में काम किया तो भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। So these are the rights and the privileges of a registered trade union. It's the impact of globalization on trade union in India. There's a lot of impact you can see on trade union when you talk about globalization. See, globalization का meaning ही होता है कि the trade union has a issue, has a problem on a globalized level. When you talk about the things which goes beyond the boundaries of a country, उसको हम लोग बोलेंगे globalization. So collective bargaining power of the union has become weakened. As against it, employer militancy has increased in the form of lockout, retrenchment, and closure, which leads to shrinkage in the employment in the organized sector. अभी क्या हो गया ना कि एम्प्लॉयर्स भी बहुत शातिर हो गए एंड दे ऑल्सो मेक श्योर दैट कि अगर आप ज़्यादा नाटक करोगे ना तो हम लोग रिट्रेंच कर देंगे, लोगों को काम से निकाल देंगे या कंपनी बंद कर देंगे, तो जाओ जो करना है आप करो। ओके, वैसे भी बहुत मारामारी चल रहा है बाहर मार्केट में जॉब्स के लेके, हम भी हमारा कंपनी बंद कर देंगे। सो कंपनी हैज़ इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो कंपनी में 1000 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूर फर्क पड़ेगा, बिकॉज many people lives on a daily wages. Labor flexibility measures have either replaced regular job with a contract job or have at least created bad jobs. So nowadays what happening, the flexibility इतना बढ़ गया है लेबर का कि परमानेंट जॉब्स का जरूरत ही नहीं है, सारे कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे
लोगों को लेते हैं एंड एट वेरी लो फेयर या लो वेजेस पे उनसे काम करा के लेते हैं. Labor penetration by the union in the unorganized sector is the only at the stage of infancy and needs to be fostered and accelerated pace. Indian law ensures strong protection for the rights of workers but gives limited access to the workplace to union. Companies are increasingly adopting methods to lower wages and social security costs by adopting measures like privatization, closures, layoff, retrenchment, voluntary retirement schemes and subcontracting. अभी कंपनीज इतना कम वेजेस देने की कोशिश कर रही है कि एक तो उन लोग सोशल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं एंड मेनी गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो आर हैंडिंग ओवर बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बंद हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं. ओके, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए फोर्स कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट. That this is a very bad impact you can see due to globalizations. Then again trade union also face good amount of issues. ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करता, ट्रेड यूनियन भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अनइवन ग्रोथ. Uneven growth, you can see there's a no equal growth or even growth in all industry. अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हो रहा है या किसी और सेक्टर में भी सिमिलर ग्रोथ हो रहा है. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी देखो ऑलरेडी फार्मर लोग का इतना सारा प्रोटेस्ट यू कैन सी ऑन टीवी. सो कांग्रेस इज गिविंग सपोर्ट टू देम, बट ये सारा चीज आपको हर इंडस्ट्री पे नहीं मिलेगा. अगर कोई इंडस्ट्री में आपको लग रहा है कि बाबा अच्छा खासा होल्ड है, व्हाट यू से, अच्छा खासा होल्ड बना के रखा है यूनियन वालों ने, तो जरूरी नहीं कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेक्टर्स में होल्ड होगा. तो किसी सेक्टर में होल्ड है, किसी सेक्टर में होल्ड नहीं है, तो इट हैज ए अनइवन ग्रोथ. अगर सारे इंडस्ट्रीज में सिमिलर काइंड्स ऑफ ग्रोथ रहेंगे तो बेनिफिट है. अगर सारे इंडस्ट्री में सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. तो इट हैज अ अनइवन ग्रोथ. देन लो मेंबरशिप. people the people really want to enjoy the rights of trade union but they do not want to pay the money. Whatever the subscription fees are there, वो subscription fees भी नहीं भरते हैं. 100 रुपया या 200 रुपया जो भी होता है वो लोग वहाँ पे भरते ही नहीं है. सो इट्स द पीपल रियली हैज अ वेरी लो मेंबरशिप. इससे क्या होता है कि अगर ट्रेड यूनियन को रिकग्नाइज भी करना होगा तो वो रिकग्नाइज नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयर क्या चेक करती है कि कितने आपके पास मेंबरशिप है. जितना मेंबरशिप आपके पास होगा उतना ही आपका यूनियन स्ट्रांग होगा. जितना आपका मेंबरशिप कम होगा उतना आपका ट्रेड यूनियन वीक होगा. Poor financial positions, as people do not pay the subscription fees, so trade union don't have money. They don't have money, so they don't have money to give salaries to the employees, to the office bearers. They cannot hold expenditures of stationery, light bill. जो उनके expenses होते हैं वो expenses वो cover नहीं कर सकते. So the poor financial positions यहाँ पे हो जाता है सारा चीज, because people do not pay good amount of money in the trade union facilities. Then political involvement in India. India is very different country. यहाँ पे कैसा है ना कि कोई भी अगर मसला होगा किसी कंपनी का, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से हर एक ट्रेड यूनियन दे आर हैविंग अ कॉन्टैक्ट विद द पॉलिटिकल पार्टी. आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो या कोई भी ट्रेड यूनियन ले लो, उनको कहीं ना कोई कनेक्शन होता है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से. तो छोटा मोटा इशू भी अगर होता है तो छोटा मोटा इशू को दिस पॉलिटिकल पार्टी मेक सम बड़ा वाला इशू और उसको खुद के बेनिफिट के लिए ना पूरा वाट लगा देते हैं. तो यहाँ पे कैसा है, ट्रेड यूनियन में बहुत सारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है. दिस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री. मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन. मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो से ज्यादा यूनियन या एक से ज्यादा यूनियन. वेन एवर देर इज अ मोर देन वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री, the entire benefit can be taken by the employer. बिकॉज एम्प्लॉयर क्या करता है कि दो यूनियन है तो दोनों यूनियन को झगड़ा करा दो, दोनों यूनियन में झगड़ा लगा दो और आप आगे बैठ के तमाशा देखो.
So when you have the multiple unions in one industry, the employer always enjoy, because एक यूनियन कुछ अच्छा करने जाते हैं तो दूसरा यूनियन उसकी टांग खींचती है, दूसरा यूनियन कुछ करने जाती है तो पहला यूनियन उसकी टांग खींचती है. So this such kind of multiple unions creates lots of issues. Then inter-union rivalry. Whenever you have two or more unions, आपको झगड़ा देखने मिलना ही है. You can see lots of fight whenever you have two or more unions. So it is not good. Inter-union rivalry का मतलब होता है कि दो यूनियन का झगड़ा. You can always see n numbers of fights between two unions. Lack of efficient leader. Many of the trade union do not have the efficient leader. Leader is more important and a crucial part. Okay, the leader always plays a very important role. Such kind of trade union, there are many trade unions are there जहाँ पे efficient effective leader मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर effective leader नहीं है तो he will fail to carry or to hold the entire trade union, and he won't able to solve the issues of employees. Then lack of recognition. Yes, whenever you have a low subscription, you have a low membership, so whenever you have a low membership, you will always face a problem. You will not be get recognized by the employer. अगर आपको अच्छा खासा recognized होना है, तो it is more important for the organization. It is more important for trade union that they have good amount of strength. Whenever they have a good amount of strength, you will be always be recognized. Then organize opposition from the employer. Many a times there you can see opposition from the employer as well. बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि employers उनको recognize नहीं करना चाहता है. employer को ऐसा लग रहा है कि we are not ready to recognize you, and वो बहुत सारे चीज में टांग अड़ाते हैं. बहुत सारे चीज में लोग बोलते हैं कि we will not support the trade union, will not recognize you, तो we do not want to uh, what you say, they try to create disciplinary actions, okay, against the employees. They try to do some or the other kinds of harassment to the employees. So you can see n numbers of things which can be working against the employees in an organization. So बहुत सारे टाइम क्या होता है कि employer अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, and he try to pressurize the trade union. He try to make sure that कि वो जितना व्हाट यू से जितना जितना ज़्यादा जितना कम उड़े उतना अपने लिए बेहतर रहेगा. तो ही विल ऑलवेज मेक श्योर दैट कि he'll put his pressure, he'll put the maximum pressure on trade unions. Then you have indifferent attitude of a member. There are lots of members you can see in trade union. So these all trade union members will have their डिफरेंट एटीट्यूड. एक कोई अच्छा बात करता है तो दूसरा बुरा बात करता है. तो ऑल द एम्प्लॉयज of the organization has a very different point of view, a different way of working. Okay, so these are the problems faced by trade union in the India. कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, जस्ट ये स्लाइड को गो थ्रू करो. इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट. व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? सब सो गए क्या? नहीं सर. What is collective bargaining? Collective bargaining is a negotiation. Negotiation.
हाँ बोलने वाली थी। हाँ, तो बोला क्यों नहीं फिर, बोलने वाले हो। Collective bargaining is a negotiation between the employer and the employee. Done, sir. Done? No, sir. No? Okay. 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 Done, sir. Okay. So there are various characteristics are there of a collective bargaining. First, it is a collective. So collective का मतलब होता है collective bargaining. Collective bargaining is most importantly is a two-way communication. It is not a single way communication. ये एक साइड से नहीं होता है, ये दोनों साइड से होता है, and it has a common interest. So most importantly, whenever you talk about a collective bargaining, it is a two-way communication where both the employer and the employee comes together, they meet together, and whatever issues are there, whatever problems are there, they try to resolve it on a when this both the people will sit together and try to resolve the issues. वापिस इशू आया ना सुनने में, सुनाई दे रहा है? People can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, ठीक है, ठीक. Okay, then strength is most important. It has an equal strength the both the parties. For example, the employer the employer and the employee has a equal right to do good amount of collective bargaining. See, collective bargaining is the way out. It is a negotiation which try to fulfill the demands of both employer and the employee. दोनों लोगों का जो demands है वो fulfill करने का purpose होता है negotiation. So collective मतलब trade union or employer, trade union and employer both will sit together and they will discuss whatever issues or problems are there, and they will collectively will sit together and do healthy discussion करने के बाद they will come to some certain solution. Then it is flexible. See, you cannot be rigid whenever you do negotiation. जब भी आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, तो आप झगड़ा करते हो क्या हर बार भाजी वाले से? नहीं, तू मेरे को 30 रुपए में दे, ओके, वो 60 बोल रहा है, आप 30 बोल रहे हो, तो आप दोनों भी फ्लेक्सिबल हो के एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके 45-50 रुपीज पे बीच में कैसे भी आ जाते हो. तो इट इज फ्लेक्सिबल. The union or even the trade union or a management cannot be rigid on their demands. They need to be more flexible. Say the conversation starts with rigid tone, but at the end of the conversation, at the end of the negotiation, it is flexible. आप हमारा दो चार काम करो, हम आपके दो चार काम करेंगे. That's why it has a characteristics of a flexibility. Then voluntary, it is yes, both the workers and the management comes together voluntary, and they voluntary try to negotiate the issues, whatever issues are there, they voluntary will sit together and they will discuss the issues with each other and they'll come to a solution. कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस. कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया और उसका काम खत्म हो गया. सो इट इज़ वन ऑफ द कलेक्टिव प्रोसेस विच नीड्स टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. Dynamic, yes, it is a dynamic process. Okay, collective bargaining
comes to an agreement, whenever collective bargaining is implemented, it is something like it is not ended with the problem, it ended with the agreement. It is started, it begin with the agreement. Okay, so mental makeup उसमें होता है, whatever changes happen. Okay, changes grows and expand over time. So the concepts are there, where many things needs to be taken into consideration. ओके, जब भी सारा चीज होता है तो सारा चीज कंसिडरेशन करने के बाद ही यू हैव टू गो फॉर अ कलेक्टिव बार्गेनिंग. देन पावर रिलेशनशिप, यहाँ पे कैसा है ना कि ट्रेड यूनियन अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा. बोथ दी ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर विल ट्राई टू शो देयर पावर. दे ट्राई टू मेक श्योर दैट कि हमारे डिमांड्स ज़्यादा फुलफिल होने चाहिए, हमारा जो भी हमने मांगा है वो ज़्यादा फुलफिल होना चाहिए. तो माइट बी एम्प्लॉयज़ का होगा कि हमको वर्किंग आवर्स कम रहने चाहिए, ज़्यादा पे पैकेज मिलना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होगा कि दे शुड गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, आई विल पे लेस अमाउंट ऑफ salary to the employee. So vice versa, whatever. So each and every person will try to make sure that they'll what you say, uh, they will uh, they will try to empower, they'll try to make sure that they'll push power, and they try to show their power to each others. Representation, yes, it is a representation. Both the employer and the trade union will are the representative of each other. Okay, the managements are the representative of the organizations, wherein the trade unions are the representatives of the employees. तो both the peoples are they are representative. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स के लिए होता है, ये सारे लोगों के लिए. इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Then it is a bi-party process. Yes, no third party is involved in this process. So it is a bi-party. Bi-party मतलब two parties. Tri-parties का मतलब होता है three parties. So bi-parties is most importantly that only two parties are involved in two conversations or negotiations. That is the trade union, and the second is your employer. Then it is a very complex process. Okay, it is not so easy process. It is one of the most complex process whenever you start with the negotiating part. It has list of agendas that needs to be keep in your hand. Then you need to understand what to be done in negotiating, how to start the negotiation, okay, how to end the negotiation, on which point we need to be more emphasized, we need to put more pressurize. Okay, once the negotiation is done, you need to maintain into written format. written format के बाद उसको agreement में convert करना पड़ता है. agreement को बनाने के बाद you need to give that agreement to the employees, and once it is approved by them, once they are okay with them, then it will be implemented. So it is not that कि negotiating बहुत easy काम है. Negotiating is one of the difficult part. So people should have the negotiation skills. So it is not so easy that you are you it is that किसी भी तरह का कलेक्टिव बार्गेनिंग कंपनीज में करना है तो आपको अच्छा खासा नेगोशिएटिंग होगा. तो नेगोशिएटिंग बहुत आसान काम नहीं है. ओके, these are the various characteristics of collective bargaining. Then it has the importance of collective bargaining. First, it develops the better understanding between the employer and the employee. Yes, the collective bargaining surely creates a good amount of understanding between the employer and the employee. Both the employer and the employee को एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए. एंड दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस विल श्योरली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय प्रॉपरली. क्योंकि यहाँ पे झगड़ा नहीं होता है. झगड़ा मतलब अ हेल्दी डिस्कशन हैपन्स, अ हेल्दी नेगोशिएशन हैपन्स. ओके, सो if any company needs to run smoothly, properly, without any strikes, without any problems between the employer and the employee, a proper negotiation या collective bargaining process will surely help. Then promotes the industrial democracy. See, we live in a democratic country. Okay, India is a democratic country, so it whatever problems are there, so these problems can be always solved
बाय प्रॉपर नेगोशिएशन. सो हर एक बंदे को या हर एक एम्प्लॉय को अपना व्हाट यू से दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. Okay, so participation of workers is also plays a very crucial role. Participation of employees, okay, plays a very important role in this. So it is an industrial democracy. तो जब भी किसी भी तरह का इश्यूज आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन एंड दे विल कम टू अ सॉल्यूशन. Then adjustable to change. See, companies need to adjust themselves whenever the organization has to run in a market. क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट चेंजेस होते रहते हैं, कंपनी को मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है. बट अगर एम्प्लॉयज़ खुद नहीं बदलेंगे तो कंपनीज का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, कंपनीज कैसे ग्रो करेगी. सो ट्रेड यूनियन हमेशा हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का सारा चीज़ ग्रो होना चाहिए. Organization can increase their productivity. So whenever the changes happens in a market, the management will surely request the trade union that please this changes is important. The changes is important in a market, so you need to make sure that कि ये सारे changes हमको हमारे company में implement करने चाहिए. And employees will surely listen to the trade union organizations, and they will follow. So whatever adjustments are there, they can easily do that. Quick implementations of decision. Whenever the collective bargaining happens, there is a immediate implementation can be done. क्योंकि ट्रेड यूनियन ऑलरेडी राजी होती है, एम्प्लॉयर भी राजी होता है, एंड द एम्प्लॉयर्स विल नॉट गो, दे विल नॉट गो इन अगेंस्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. So most importantly, whenever the trade union are there in a picture, there is a very less what you say less part कि वो लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे. तो मैक्सिममली क्या होता है कि there's a whatever decisions are formed between the employer and the employee, the decisions can be implemented immediately. Then beneficial to both the parties. Whenever collective bargaining happens, the collective bargainings, whatever decisions comes out or whatever outcomes are there, it is surely will benefited to both the parties. So it is more important for the companies also कि जो भी collective bargaining decisions forms होते हैं वो सारे decisions हम लोग immediately implement करें, और इससे दोनों का फायदा है. एम्प्लॉयज़ को भी उनके सारे हक्स मिलेंगे, उनको जो राइट्स देगा वो मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या क्या ज़रूरत है वो भी सारा चीज़ उनको मिलेगा. सो दिस इज बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज. Then there is scope of a collective bargaining. Cooperations and communication between the trade union organizations and management. Just we have discussed there's a proper cooperations and communication between the trade union. Employment and working conditions. Yes, a proper employment and working conditions यहाँ पे हो सकते हैं whenever you do good amount of negotiation. अच्छा खासा अगर आप लोग negotiations करोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज भी मिलेगा. यू कैन इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस इन कंपनीज. जो जो आपके वर्किंग कंडीशंस आए आपके ऑफिस में वो आप उसको बेहतरीन कर सकते हो. प्रॉपर वेंटिलेशन, रेस्ट रूम, सैनिटाइजेशन, ओके, लाइटनिंग फैसिलिटीज, टेबल फैसिलिटीज, ये सारा चीज़ आप उसको आराम से अच्छे से यहाँ पे कर सकोगे. Wages and remuneration. So whenever companies having an issue, yeah, employees having an issues of a salary or wages, okay, वहाँ पे आराम से अच्छे से आपको you can discuss. Trade union can easily discuss the entire issues with the management and try to resolve the problems of wages and remunerations. Occupational safety and health, most important concept of every organizations. कंपनीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी सेफ्टी और आपका हेल्थ, स्पेशली इन एन केमिकल इंडस्ट्री. तो केमिकल इंडस्ट्री से अगर काम करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका हेल्थ. सो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्थ गैजेट्स नहीं हैं, सेफ्टी गैजेट्स नहीं हैं, जैकेट्स या हेलमेट्स या गॉगल्स, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज नहीं है, तो वॉट एवर सेफ्टी इश्यूज आर देयर,
you can discuss all the things with the organizations. आप उसको आराम से डिस्कस कर सकते हो और डिस्कस करने के बाद यू कैन इम्प्लीमेंट इमीडिएट थिंग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने कंपनी में उसको इमीडिएट डिस्कस करके उसको आप आराम से इम्प्लीमेंट करोगे। इससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ का हेल्थ एंड सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। The human resource development and other social issues. Human resource development is also important. Career advancement are also there. Okay, the career opportunities हम उसको दे सकते हैं लोगों को। Okay, and that is more important for them. Whatever a career है, या training facilities है, okay, whatever things, many peoples are there कि उनको अच्छा खासा प्रमोशन या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज या स्टडी इन अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज ये भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग एक अवेलेबिलिटी या फैसिलिटी करने की कोशिश कर सकते हैं। देन this more importantly, that whenever there is a conflict between a trade union or between what you say the management, collective bargaining will surely helps out to resolve the conflict between the trade union and the employer। ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा हेल्प करेगा। सी जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो बात करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक जरिया है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो और एक दूसरे से बात करके सारा चीज़ सॉल्व करके उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट सेड टू बी योर रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन। Then it is a process. Okay, it is a process how the collective bargaining is done. First of all, you need to do a preparation. The first important, you need to do, both the trade union and both the management needs to do good amount of preparation। जब भी आप negotiations के लिए बैठोगे तो आपके हाथ में अच्छे खासे फैक्ट्स एंड फिगर्स होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके हाथ में नहीं होंगे तो आप नेगोशिएशंस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट के हाथ में करंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ओके, करंट आउटपुट का रेट्स, सारा चीज़ आपके हाथ में होना चाहिए। अगर हम ट्रेड यूनियन के साइड से बात करें तो करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के पास कितना सारा पैसा है, कितना सारा पैसा कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे कितना आउटपुट मिलेगा, या कंपनीज का करंट स्टेटस क्या है, नुकसान में है, फ़ायदा में, वो सारा चीज़ एम्प्लॉयर को या ट्रेड यूनियन को पता होनी चाहिए। अगर ये सारा चीज़ आपको पता नहीं है तो जो भी आपके डिमांड्स रहेंगे, वेजेस, रेम्यूनरेशन, जो भी आपके डिमांड्स होंगे वो फुलफिल करना थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा। So most importantly, whenever you want to do negotiation, the most important part is that you need to do a proper preparation. Second, identifying issues for bargaining. Both the management and both the trade union needs to find out on what topic you need to bargain। आपको कौन से इश्यूज पे या टॉपिक्स पे आपको बार्गेनिंग करना है, आपको डिस्कशन करना है, वो सारे चीज़ पे आपको खुद को सोचना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको नेगोशिएशन कर सकते हो। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि दोनों पार्टीज को सारा चीज़ आपको फाइंड आउट करके दोनों पार्टीज को आपको आपका जो इश्यूज प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढ के आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको नेगोशिएशंस के लिए हेल्प आउट होगा। थर्ड इज नेगोशिएशन। दिस इज द पॉइंट वेयर यू डू द प्रॉपर नेगोशिएशन। वेजेस एंड रेम्यूनरेशन का इशू है तो आप वेजेस एंड रेम्यूनरेशन को लेके डिस्कस करोगे। ओके, तो वर्किंग कंडीशंस का आपको इश्यूज है तो वर्किंग कंडीशंस पे डिस्कस करोगे। देन यू हैव वर्क एम्प्लॉयमेंट या सोशल सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो उस पर आप डिस्कशन करोगे। तो हियर यू एक्चुअली डिस्कस ऑन टॉपिक्स, हियर यू एक्चुअली टॉक ऑन टॉपिक्स कि ये सारा प्रॉब्लम्स है। Then agreement. Once the negotiation is completed,
both the parties go ahead with good amount of agreement. तो एग्रीमेंट बनता है, जो जो डिस्कशन हुआ, जैसे मीटिंग्स के बाद मिनट्स बनाते हैं ना हम लोग, तो मिनट्स में कैसा होता है, जो जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ उसका हमने एक अच्छा ब्रॉड मिनट्स बना लिया कि ये डिस्कस हुआ, वो डिस्कस हुआ, तो उसको राइटिंग डाउन लगता है। वैसा ही जो जो नेगोशिएशन में एक्सेप्टेड हुआ उसको हम लोग एग्रीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। Then ratification of agreement. So if the agreement once prepared is sent to the एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन एज वेल, तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट एक एग्रीमेंट बनाएगी और एग्रीमेंट चेकिंग के लिए एम्प्लॉयज के पास सबमिट करेगी। तो दे विल सबमिट द एग्रीमेंट टू द एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज विल गो थ्रू या ट्रेड यूनियन विल गो थ्रू द एग्रीमेंट। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होता है, दैट चेंजेस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो वो रेक्टिफिकेशन करने के बाद दे विल अगेन सेंड द एंटायर agreement to the management, and once the rectification is done, whatever changes are done, तो वो changes done करने के बाद में the entire agreement will be implemented, और वो you can say the agreement can be implementation of an agreement, उसको हम लोग बोलेंगे implementations। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट आप प्रिपरेशन करो, उसके बाद वॉट एवर इशूज पे आपको डिस्कशन करना है वो डिस्कशन को फाइंड आउट करो, नेगोशिएशंस करो, नेगोशिएशन के बाद एग्रीमेंट में कन्वर्ट करो, एग्रीमेंट यू सेंड इट टू एम्प्लॉयज फॉर रेक्टिफिकेशन। once the rectification is done, the implementation part is there. Understood? Then there are certain perquisites are there whenever you do a good amount of collective bargaining. First of all, you need a strong team. Strong team is more important part. Whenever you do a negotiation, yes, you required a good amount of team with you. Okay, if the employer does not have any kind of strong team, if they do not have the minimum members to represent themselves, कंपनी उनको खड़ा भी नहीं करेगी। अगर आपको आपके डिमांड्स फुलफिल करके लेने हैं तो आपके हाथ में या आपके साइड से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है तो आपका ये जो नेगोशिएशंस है या कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं होगा। Freedom of association, it is a freedom of association, okay, there where there's no freedom of association there will be no collective bargaining, so it is a free association। मतलब ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन नहीं होगा तो वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो आपको अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस करना है तो यू रिक्वायर्ड एन एसोसिएशन, विदाउट एन एसोसिएशन देयर विल बी नो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। Mutual recognition, both the parties needs to be mutually recognized each other। ट्रेड यूनियन तो आराम से रिकग्नाइज करेगी, बट द एम्प्लॉयर इज नीड्स टू रिकग्नाइज द ट्रेड यूनियन। अगर द ट्रेड यूनियन रिकग्नाइज नहीं करेगी तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस करना है तो आपको इम्पोर्टेंटली एक दूसरे को रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको रिकग्नाइज नहीं करोगे तो ना ही कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस होगा, ना ही इसमें से कोई आउटपुट आएगा। कंडेंसिव क्लाइमेट का मतलब होता है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट कि जहां जहां पे जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है पॉजिटिव आउटकम्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सो व्हेनेवर यू सी अ कलेक्टिव बार्गेनिंग you have the opportunity to get a positive results, so it is most important part। Exercise power and authority, so most importantly यहाँ पे again organize workers organizations must have strong enough to exercise its authority। The trade union should have control over their employees। अगर ट्रेड यूनियन अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो भी ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो सारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों को ट्रेड यूनियन को संभालना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन 2 मिनट्स।
Okay, so you need to make sure that you have a proper uh, exercise power with you. Okay, so this exercise power will make sure that you have a proper holding on the employee, so you have a proper what you say, you have the control on the employee. So आपका आपके एम्प्लॉयज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. Then avoid mutual consideration should also there. A proper mutual consideration between two parties should also be there. मतलब एक दूसरे को थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके म्यूचुअल में जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. सो कंसिडर नाइदर इट शुड बी सो रिजिड कि हर एक बात पे आपको रिजिड नहीं होना चाहिए. शुड बी एटलीस्ट फ्लेक्सिबल इनफ ऑन ईच अदर. जो जो आपके इश्यूज रहेंगे आप एक दूसरे पे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. देन अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस. सो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोटेस्ट है या प्रॉपर्टी डैमेज है या धमकाना है या काम बंद करना है, ऐसा जो भी आपका काम होगा दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. दैट ये सारे चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि आप एम्प्लॉयज के सारे चीज़ों को या कुछ भी जो होगा किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम्स आप कंपनीज में नहीं कर सकते. तो जो भी अनफेयर प्रैक्टिस होगा दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. Then there are different types of collective bargaining. Are there? First it has a conjunctive or a distributive bargaining. Conjunctive or a distributive bargaining is very simple in terminology कि एक का विन दूसरे का लूज. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक का विन मतलब एम्प्लॉयर का विन होगा तो ट्रेड यूनियन का नुकसान हो जाएगा, ट्रेड यूनियन का विन होगा तो एम्प्लॉयर का नुकसान होगा. तो अगर यहाँ पे कैसा है कि वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही है और आपको सैलरी भी दिया जा रहा है, तो इसे ना मैनेजमेंट का नुकसान होता है. दूसरी बात में अगर लोगों से काम भी करा के ले रहे हो और पगार भी नहीं दे रहे हो तो इसमें एम्प्लॉयज का नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट का बेनिफिट हो रहा है. So it's a conjunctive or distributive bargaining in which whenever you have things, it's one party will win but the other party will surely lose. Cooperative or integrative bargaining में it is one of the best bargaining situation in which both the party has a win-win situation. यहाँ पे दोनों भी party has a win-win situation. कोई भी party lose नहीं करती, but दोनों party will come to the amicable solutions and they try to resolve the problem जहाँ पे दोनों को अच्छे से output या दोनों को अच्छे से what you say get the benefits. तो both the parties has a win-win situation. Productive bargaining is very common and easy. दैट कि आप जितना प्रोडक्टिविटी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा. आप जितना मुझे फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जितना प्रोडक्टिविटी करोगे उतना बेनिफिट हम आपको देते जाएंगे. दैट इज सेड टू बी द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग. जितना कम प्रोडक्टिविटी करोगे उतना ही आपको कम बेनिफिट मिलेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी करो उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. Composite bargaining, something like rather than the financial benefits, the organization gives the other benefit to the organization, to the employees. जैसे recruitment है, then training and development, environmental issues जो है वो उसमें करते हैं, mergers and amalgamations, rather than other financial and financial constraint. जो बाकी होते हैं उसको मतलब बार्गेनिंग, जिसपे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट बार्गेनिंग. ओके,
Then there are three levels of bargaining as well. Okay, it has a bargaining at national level, industry level, and enterprise level. Okay, so कभी भी जब आपके व्हाट यू से नेगोशिएशंस होते हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग तीन लेवल पे आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइड कवरेज. इकोनॉमिक वाइड कवरेज का मतलब होता है यू हैव द you can do the negotiation at national level. आप country level पे negotiations भी कर सकते हो. Then you can do negotiations on industry level. आपकी specific industry है तो आप specific industry level पे भी negotiations कर सकते हो. एंड एंटरप्राइज लेवल. एंटरप्राइज मतलब इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे आप सारा नेगोशिएशंस यहाँ पे कर सकते हो. तो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशंस. इकोनॉमिक वाइड कवरेज फ्रेम का मतलब होता है नेशनल लेवल, कंट्री लेवल पे नेगोशिएशंस. तो अगर आपकी बड़ी ट्रेड यूनियन है तो बड़ी ट्रेड यूनियन को आप आराम से नेशनल लेवल पे नेगोशिएशंस कर सकते हो. देन इंडस्ट्री या सेक्टर, तो आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो वहां पे आप उसका नेगोशिएशन या कंट्री बार्गेनिंग कर सकते हो. एंटरप्राइज लेवल का मतलब होता है कि आप एक इंडस्ट्री या जो भी कंपनी में काम करते हो वहां पे आप आराम से उस पर नेगोशिएशन कर सकते हो. सो दिस आर द प्लान्स विच आर मेड. आपको सब गो थ्रू करो खाली प्लान्स एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को. फर्स्ट 5 प्लान में क्या हुआ था, सेकेंड 5 प्लान में क्या था, थर्ड 5 प्लान में क्या था, फोर्थ 5 प्लान एंड फिफ्थ 5 प्लान. ओके. Done with this slide. Yes, sir. Done. And this is the last slide. It shows the National Commission on Labor and collective bargaining. There is need to involve some.
Okay, done with the slide. Yes. Yes, sir. Okay, so in this entire chapter, Collective bargaining. yes, ये सारा हमने already सारे points पहले भी किए हुए हैं, तो I'll not go with these points. The Okay, sir. similar like the trade union, multiplicity of union, inter-union rivalry, political affiliation, lack of definite procedure, easy access to adjudication and political orientation. ये सारे points हमने पहले भी किए हुए हैं. Yes, sir. Okay, so here we have completed our entire unit 3. Okay, Okay, sir. any doubt in the chapter? इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो घूम फिर के ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पे चैप्टर यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है. ओके, तो आई Yes, शेयर sir. द लिंक. आप लोग मूडल पे हो क्या सारे लोग? Yes, तो sir. मूडल पे है, पर मूडल पे ज्यादा देर कनेक्ट नहीं रहता है. हर 5 मिनट के बाद रीलॉग करना पड़ता है, क्योंकि मूडल को लगता है कि वी आर गॉन, तो फिर वो डायरेक्ट ये करता है आपको लॉग आउट. कुछ कुछ लोग का तो अच्छा, लॉग इन भी नहीं होता. ऐसा इश्यूज भी है क्या वहाँ पे? हाँ सर, कंटिन्यूस आपको करना पड़ता है उसके लॉग इन. ओके, तो व्हाट आई डू, आई शेयर द लिंक ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब. तो ओके आप सर. वहाँ से चेक कर लीजिए यूट्यूब से, ठीक है? तो अगर आपको डाउट रहेगा तो आप वहाँ पे सेशन पे आप चेक कर सकते हैं वीडियोस. चलेगा सर. Yes. ओके, सो shall we stop here now? Yes, sir. यस सर. Okay, thank you थैंक यू सर. everyone. रावल सर. अरे ही went. गए गए, क्या हो गया? अरे अपना एग्जाम का क्या सीन है? लाइक अरे मोस्ट वो कॉलेज का वो तो पता नहीं अभी, वो तो बताया नहीं. अरे अभी इधर कुछ हो ही नहीं, तो भी है. किसी भी थर्ड ईयर वाले का हुआ नहीं अभी तक एग्जाम्स का या कुछ भी. नहीं हुआ अब तक. नहीं, सेकंड ईयर वालों का हो रहा है, सेकंड ईयर और नहीं, फर्स्ट ईयर क्योंकि वालों का चल रहा है. पेपर वगैरह सबका इंटरनल चालू हो गया है. हाँ, इंटरनल चालू हो गया है. हाँ, वही तो अभी देख. अब मेन एग्जाम्स नहीं चालू है. ठीक है, चलो, चलेगा. चल बाय. बाय.